Thank you, Chakravarti sir, for having me here. Um, uh, let's get back to the presentation. मतलब जितना जल्दी हो सके, because you'll get to know a lot of things. मतलब regarding our entrepreneurial journey, which was started like 3 years before. So I'll just go to the presentation. So I'll start with the very beginning of our journey. So when I was doing my architecture from SPA Delhi, so there was a design competition which was organized by IGBC, if you have heard of, Indian Green Building Council. Or this competition was made into a class project actually that time. So we have to have participate in this project. So we had to design a zero carbon energy green building at that time. So this was the design what you're seeing in the screen. So we took a living bamboo. So bamboo आपको पता होगा already कि एक cluster में grow करता है. Yeah, so in Assam, you'll get these bamboo cluster of let's say 40 to 50 feet height. ठीक है, इतने इतने लंबे bamboo. Not only in Assam, मतलब north east सारा. So yeah, so this was the design we presented at that time, or what we did was we just simply took the peripheral bamboo of the cluster and we compressed it. और जो बीच वाले बैम्बू है वो टेंशन में है, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज अ स्पेस इन बिटवीन. सो या दिस इज द प्लान व्यू ऑफ दोज of the design. This is the sectional view, and fortunately we won the award that year. That was in 2009, and तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को अवार्ड दिया था उस टाइम 2009 में. सो इट वाज एन आई ओपनिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज आई नेवर न्यू द पोटेंशियल ऑफ बैम्बू, दैट इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पोटेंशियल, इट आई मीन एज अ मटेरियल इंडस्ट्रियली. ठीक है, तो लेटर ऑन आई वर्कड एज एन आर्किटेक्ट फॉर एन ईयर, और डेली कम्यूट करने के लिए I wanted to have something, and I was really passionate about bicycling. So I thought, why not I should make one. So this was the bicycle I made during that time. This was in 2013, I believe. तो ये मैंने सिंपली एक जंकयार्ड से एक फ्रेम उठाया, और फ्रेम बहुत ही ख़राब कंडीशन में था, तो आई जस्ट रिप्लेस दोज मेटल मेंबर्स विद बैम्बू. And this bicycle later on I took here. मतलब यहाँ IIT बॉम्बे में मैं करीब 2 साल इसको यहाँ पे in this harsh climate, मतलब बारिश वगैरह में इसको मैंने यहाँ पे चलाया था. So yeah, this was the bicycle that time. And later I found myself very much interested into product designing. So उसी की वजह से I got into IDC. And in IDC, during my internship, I went to Orvu. So it's an NGO in Kerala, Wayanad. तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैम्बू का काम होता था, पर ऐसा कोई मुझे उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था कि आई हैव टू वर्क इन बैम्बू, बट सिंपली आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद एन NGO देयर. सो आई जस्ट वेंट, एंड देयर दे हैड रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट के अंदर काफ़ी सारे बैम्बू के फर्नीचर थे, पर काफ़ी बैम्बू के फर्नीचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. मतलब सो आई टुक जस्ट वन इशू, दे आस्क्ड मी टू सॉल्व इट. सो दैट वाज द चेयर व्हाट दे हैड, और आई डोंट हैव द इमेज ऑफ दैट चेयर अनफॉर्चुनेटली, बट दैट चेयर उसका CG काफ़ी पीछे था. तो इफ़ यू जस्ट लीन अ बिट बैकवर्ड, तो वो पूरा चेयर वुड हैव टॉपल बैक. So that was the thing that was happening. That was the problem that they were facing. So I thought that why need to redesign this chair? Why can't we do that? So as you can see, these were the furniture they were using in that resort. So I started prototyping. These are the mock-ups, or I'm saying prototype. Why? Because
क्योंकि बैम्बू को अगर स्केल डाउन भी करोगे ना तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है, मतलब इट डजेंट लूज द कैरेक्टरिस्टिक्स एट ऑल, जो बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ है और जो फाइबर्स है बिल्कुल वैसे ही रहता है. सो दीज आर द मॉकअप्स आई ट्राइड making, and this was the final chair I made at that time. This was in 2015 at Urvo. तो later on इस chair को काफ़ी develop हमने किया बाद में, you'll see later on this presentation. So yeah, so this chair took me like 3 months to to fabricate everything. तो ये bamboo के तुमको पतले पतले slats दिख रहे हैं, and everything was फ्लेम से बेंड किया हुआ था इसको. एंड दिस वाज द बैक रेस्ट, हाउ आई फिगर्ड आउट कि बेंड कैसे करना है. मतलब दिस टुक मी लाइक 5 days टू बेंड एंड मेक दिस बैक रेस्ट. वहाँ पे एक यूटेंसिल का जुगाड़ करके, मतलब सेम जो मुझे कर्व चाहिए था वो मिलता जुलता था, तो आई टुक दिस एंड आई मेड दिस. सो या, एंड देन लेटर as a P2 project, I took again bamboo bicycle as my project. मतलब इसमें basically इसमें मैं ये solve करने की कोशिश कर रहा था कि why can't we produce bamboo bicycle industrially? Why can't we mass manufacture it? So that was the question which was I was trying to solve as a P2 project at that time. तो ये मैंने यहाँ पे ही बनाया था IDC में. तो हियर यू कैन सी कि इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए आई नीड टू इंडस्ट्रियलाइज ये जो भी नेचुरल फॉर्म है उसको मुझे इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा बेसिकली. सो द 32 mm सेक्शन दैट यू आर सीइंग हियर ऑफ दिस MS पाइप, उसी का वही डायमीटर का सेक्शन मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ा, और एलिमेंट्स को एक साथ मैंने जोड़ा. पर बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स थे. मतलब द होल बाईसाइकिल वाज मतलब बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअल में कंबाइन हो रहे थे इसमें. तो या दिस वाज द प्रोजेक्ट एट दैट टाइम आई वाज डूइंग. एंड लेटर ऑन आई गॉट प्लेस्ड इन फ्यू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंपनीज आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हियर. सो आई वर्कड विथ a lot of materials. So this was one of the companies where I was working as an industrial designer. तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ग्लास, मेटल, फैब्रिक, इन सारे मटेरियल्स के साथ काफ़ी काम किया. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ सेट डिज़ाइन आई डिड for Gaurav Gupta, if you know him. Gaurav Gupta is one of the famous fashion designers in India. तो FDCI का फैशन शो में ये सेट डिज़ाइन मैंने किया था. Yeah, so these are few of the pictures of that set design. So yeah, so मतलब ये सारे मटेरियल के साथ मुझे मतलब काम करने से बहुत कुछ मुझे पता चला. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चली कि ईच एंड एवरी मटेरियल हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसको ना किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते तुम. तो मटेरियल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. या दीज आर फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हमने उस टाइम पे काम किया था क्लोव में. Then I also worked in Desmania, that this is one of the known industrial design company. I worked for a lot of home appliances and all. बहुत सारे split AC जो अभी मार्केट में हैं उसमें डिज़ाइन टीम मैंने लीड किया था उस टाइम. काफ़ी प्लास्टिक में बेसिकली मैंने काम किया था उस टाइम. A lot of home appliances. पर working on these all these projects, हमेशा एक दिमाग में क्वेश्चन मेरे पास घूम रहा था कि आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन बैम्बू. तो बैम्बू से ऐसा क्यों नहीं बन रहा है, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बन रही है जो मतलब मार्केट में एक्सेप्टेबल हो या कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन हो जो चले. तो ये क्वेश्चन बहुत मुझे हिट करता था, और मतलब मैं बहुत ईगर था इसका आंसर फाइंड करने के लिए. तो apart from my office time, I started again working on bamboo. ठीक है, मैंने ट्राई किया कुछ प्रोडक्ट्स बनाने का.
ये वही सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने ऑफिस टाइम में कर रहा था. तो मैंने वही अपार्ट फ्रॉम दीज आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन बैम्बू प्रोडक्ट्स एज वेल. ठीक है. So yeah, that's when I started Mianzi. This was actually a question, an answer to the question that was happening, behind my mind. कि कैसे मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाऊँ जो बैम्बू के ऐसे प्रोडक्ट बनाऊँ जो which is equally comparable with any other product that is available in market, which is made out of plastic or wood, let's say, or metal. ठीक है. तो yeah, I started with this and I collaborated with MP state government. उस टाइम पे that was around 2017-18 के टाइम पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी बैम्बू के ऊपर, ताकि बैम्बू से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी हो वो थोड़ा ग्रो करे. तो अराउंड 1200 crore रुपीज़ वाज इन्वेस्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, नेशनल बैम्बू मिशन. तो मैं सोच रहा था कि मैं अगर इतना काम कर रहा हूँ बैम्बू में तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये थोड़ा फंडिंग, ताकि मैं अपने रिसर्च में इसमें लगा पाऊँ. तो येस, आई गॉट कनेक्टेड देन विथ दिस स्टेट बैम्बू मिशन MP, और उन्होंने एक CFC मुझे हैंड ओवर कर दिया उस टाइम पे. एंड दैट्स हाउ माई टीम गॉट स्टार्टेड. वी स्टार्टेड विद जस्ट दीज 6 आर्टिसंस. वो गांव के थे और शुरू में इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, उनको समझाना बहुत मुश्किल था. बहुत टाइम मुझे लग गया इनको समझाने में कि क्वालिटी क्या होती है. और बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि बहुत सारे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स. तो ये सारे पेन पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे बहुत फोकस होके काम करना था. तो आई स्टार्ट विद द डिज़ाइन. तो अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो बैम्बू से रिलेटेड अगर डिज़ाइन हो तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो आती होंगी, टोकरियां और ये सब कुछ चलता होगा. पर आई रियली वांटेड टू चेंज दिस. ठीक है. मतलब अगर मैं टोकरी यहाँ आके रख दूँ या टोकरी का कोई लैम्प बना दूँ यहाँ पे, तो इट विल लुक लाइक एन एलियन थिंग इनटू द स्पेस, राइट? इट हैज़ टू मतलब it should blend with the surrounding elements that you have into the space, right? तो ये होना चाहिए. तो मुझे लगा कि नहीं, ट्रेंड को समझना पड़ेगा पहले कि स्पेस में क्या यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक किस क्वालिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, प्लास्टिक के कलर, मतलब प्लास्टिक, मेटल या सारा उन सारे मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका कलर्स क्या है, क्वालिटी क्या है. तो उस क्वालिटी के कंपैरिजन में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग करंटली. सो यस, तो और ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जो एलियन ना लगे. फॉर एग्जांपल हियर ये बैम्बू थोड़ा अलग दिख रहा है पर स्टिल सबके साथ भी जा रहा है. ठीक है. So this is the tulip lamp that they are using. There's a restaurant called Araku Cafe in Bangalore. तो वहाँ पे हमारा सारा लाइटिंग यूज्ड है. तो यू कैन सी मतलब how well it's getting blended to the environment here. Yeah, again here you can see मतलब कितना ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्कुल ही अलग चीज़ मैंने वहाँ जाके रख दी. ठीक है. So everything is made out of bamboo. Of course the frame are made out of steel. ठीक है. I'll talk about the material later in this presentation. So again so this is a huge living space. और ये लाइट का डाया अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो, this is 8 feet डाया लैम्प, काफ़ी बड़ा. और सबसे बड़ी बात इसमें ये पैकेजिंग जो होकर आया, ये 3x3 के बॉक्स में, छोटे बॉक्स में पैकेज होकर आया, 8 फीट का डाया का ये. और वहाँ पे जाके बहुत सिंपली असेंबल हो गया. So this is the innovation I think we should be looking at while designing, मतलब क्राफ्ट बेस्ड अगर किसी चीज़ पे अगर काम कर रहे हैं. एंड येस, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल डिज़ाइन, क्योंकि अगेन अगर तुम एक बहुत ही पुराने मटेरियल से काम कर रहे हो जिसका कनेक्शन हमारे हिस्ट्री से है, तो अगर मैं वापस से वैसे ही डिज़ाइन बनाऊंगा तो nobody is going to look at it.
ठीक है, तुम सेल ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो आई मेड श्योर कि हर एक डिज़ाइन हमारा अनकन्वेंशनल हो। सो दिस द बटरफ्लाई चेयर, द करंट वर्जन। तुमने पुराना वर्जन पहले देखा जो मैंने वहाँ पे बनाया था उर्वू में ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। So yeah, tensegrity is one of the thing which I'm really very interested in. So there is the superbot currently being used by NASA to deploy stuffs in planetary explorations. ठीक है, तो इसमें strength is to weight का ratio बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, tensegrity based, even you can see these tensegrity structures in the bridges as well. तो so the bicycle जो तुम देख रहे थे, I designed a new one. So there is the current bicycle what we have prototyped, and I am currently riding it. So there is the bicycle and this is the electric one. तो अभी तुमको बैटरी वगैरह बाहर दिख रहा है, and this is totally based on tensegrity based structure. तो हाँ, ये करेंटली मैं इसको चला रहा हूँ, एंड इट वेज अबाउट जस्ट 17.5 kgs इंक्लूडिंग द बैटरीज एंड द मोटर एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें तो बैटरी तुमको बाहर दिख रहा है, एंड अदर सर्किट्स एंड ऑल आर इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द बैम्बू, जो मतलब जो कैविटी आपको दिखता है उसी में ही है। द नेक्स्ट वर्जन आई एम ट्राइंग टू इनकैप्सुलेट द बैटरी एज वेल इनसाइड इट, ताकि और क्लीन डिज़ाइन रहे इसमें। ऑल्सो वी आर इनटू आर्किटेक्चर एज वेल, तो वी आर ट्राइंग आवर सेल्फ कि बैम्बू से मतलब आई एक्चुअली एम्ब्रेस द प्रॉपर्टी ऑफ बैम्बू, मतलब उसका बेंड होने का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग बेंड होने देते हैं और बेंड होकर चीज़ों को मतलब उस तरह से बनाते हैं। तो द आर्किटेक्चर दैट वी आर गेटिंग विद बैम्बू इज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट दैट इज़ हैपनिंग इन करसियोंग, इट्स नियर दार्जिलिंग। ठीक है, तो अगर कभी विज़िट करोगे तो दिस विल बी द वन ऑफ द साइट सीइंग पॉइंट you will be seeing there in the tea states of Makaibadi. तो we are working with Makaibadi currently. ठीक है, तो ये और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं बैम्बू से। दिस इज अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग आउट ऑफ बैम्बू। दिस अ टी एक्सपीरियंस सेंटर अगेन। What are the tiles made of? Like, वो tiles just बैम्बू, ऑल बैम्बू। तो देर आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू, बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, तो वी चूज़ स्पीशीज़ अकॉर्डिंगली कि प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली हम उस तरह की स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। या एंड मटेरियल इंटीग्रेशन is really very important while designing your product. For example, in these are the trays, these are the podium trays what we call. इसमें तुम जो बेस देख रहे हो that is of cork sheet. ठीक है, कॉर्क शीट थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो उसमें ग्रिपी नेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। दैट्स द रीज़न वाई आई हैव यूज्ड कॉर्क शीट, और एब्सोल्युटली नेचुरल सस्टेनेबल है। तो आई हैव इंटीग्रेटेड बैम्बू विद दिस कॉर्क शीट। तो मतलब हम लोग कभी डरते नहीं हैं किसी और मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करने से। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बैम्बू में काम कर रहा हूँ तो सारी चीज़ बैम्बू में ही बनाऊँगा। तो वी ट्राई to use metal as well, we try to use fabric as well. तो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे लगता है कि मुझे हमें मेटल यूज़ करना चाहिए, वी यूज़ इट, पर प्राइमरीली ट्राई करते हैं कि बैम्बू रहे और साथ में मेटल। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर करेंटली प्रोड्यूसिंग। ये है हाइव वार्डरोब, दिस इज़ द मॉड्यूलर सिस्टम एक्चुअली, और इसको आप किसी भी तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर स्पेस, एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू बुक शेल्फ, और लेट्स से अ बार शेल्फ, और किचन का कोई शेल्फ, मतलब, और अ वार्डरोब लेट्स से, like there's an example, there's another example we did for Godrej. तो मतलब बहुत ज़्यादा flexibility है इसमें। Again we are not afraid of using other materials as well. इसमें तुम structure जो देख रहे हो ये metal का देख रहे हो, और जो अंदर सारे modules है those are made out of bamboo.
एंड येस इट हैज़ टू बी ड्यूरेबल. अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो और वो बाकी के प्रोडक्ट जैसा ड्यूरेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट है या वुड के प्रोडक्ट है वैसा ड्यूरेबल नहीं है, तो फिर लोग पैसे इन्वेस्ट क्यों करेंगे तुम्हारे फर्नीचर या एनी होम डेकोर प्रोडक्ट? वाई दे विल इन्वेस्ट? सो it has to be durable. So what we usually do is while designing कि हम ट्राई करते हैं कि जॉइनरीज कम से कम रखने का. तो here what you can see कि जॉइनरी बहुत ही मतलब है नहीं. what I did is I triangulated the geometry और सिंपल नट और बोल्ट से सब कुछ जॉइन हो रहा है. तो जॉइनरी ऐसे नहीं है कि हाफ पार्ट इसका कट हो रहा है और उसका हाफ पार्ट कट हो रहा है और जॉइन हो रहा है. तो ऐसा डिज़ाइंस हम अवॉइड करते हैं. एंड दिस टूल इज़ जस्ट वेज 2.5 kgs और लोड लेता है अराउंड 250 kg का. or the cross section each cross section that you are seeing, I mean the legs that you are seeing is of just of 8 mm thickness of bamboo. ठीक है, तो इतना लोड ये बेयर करता है. So yes. Shashank, the all the designs like are fabulous, and the way it's going, and then we want to know like because of your experience of the user, of the context, the pain of the user. For example, the pain. See, whatever you'll be doing is from a point of view of selling, right? Like you have to sell Yes. these, right? So like from the design, we want to see, now that we'll all, half an hour is over, we're a little concerned of the entrepreneurship story also. So that we are very very keen on, because design तो हम बहुत सीखते हैं IDC में, but biggest Right. challenge is how does this design transform into a customer, solving a customer's pain, so वो बहुत दूर हो जाता है actually, Right. so like Right. we wanted you to focus on that also in the next half an hour. No, absolutely. I'm coming on to that as well. I'll be talking about marketing. I mean, Sugandha will be talking about marketing. Then also the logistics of the yeah. So everything will be I'll be talking on those as well. So yes, so मतलब ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं और तभी खरीदते हैं. मतलब फर्नीचर और प्रोडक्ट्स वगैरह तभी वो इन्वेस्ट करेंगे. वो लोग ऐसे ही झूठ मूठ का पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं ऐसे फ्री में. ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अनदर पिलर विच वी हैड टू लुक अपॉन, क्योंकि जो पहले के टाइम में जो क्राफ्ट जिस तरह से वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे कि कोई अगर वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक प्रोडक्ट दूसरे से मिलता नहीं है. तो ये इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग मुझे नहीं लगा कि ये काम करेगा. और देर हैज़ टू हैव some kind of standardization that should happen. तो क्वालिटी और फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. क्राफ्ट में वो क्वालिटी और फिनिश नहीं आ रही थी अभी तक बैम्बू के क्राफ्ट में. तो वी मेड श्योर कि क्वालिटी और फिनिश आए. तो वी डेवलप्ड अ लॉट ऑफ मशीन्स and we developed a lot of molds, jigs, जिसके वजह से हमने क्वालिटी और फिनिश लेकर आया, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आया प्रोडक्ट में, ताकि एक प्रोडक्ट का पार्ट, फॉर एग्जांपल द लेग ऑफ दिस चेयर कैन आल्सो बी फिक्स्ड इन अनदर चेयर. अगर ये चेयर ख़राब हो जाता है या ऐसा कुछ, या तो उस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन लाना बहुत इम्पॉर्टेंट था. और ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी के लिए वी ट्रीट इट विथ जो भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है. तो हियर वी आर ट्रीटिंग इट विथ बोरिक बोरैक्स सॉल्ट, जो बैम्बू को अगेन ड्यूरेबल बना देता है. अगर बैम्बू 2 साल चलने वाला होता है तो नाउ बैम्बू का एज हो जाएगा 25 साल. ठीक है, इन सब चीज़ों के ट्रीट करने के बाद. So for example, this lamp that we are currently producing, we use a lot of molds for each of the lamp. For example, वो पिछला वाला लैम्प के लिए हम लोग इस तरह का मोल्ड यूज़ करते हैं. तो ये सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह में, जो जिस तरह का कोर और कैविटी वगैरह का जो मोल्ड जैसा बनता है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. एंड so this mold can be dismantled into 4 parts, छोटे छोटे में, और वो निकल के बाहर आ जाता है. And these artisans can easily mold these lamps onto
दोज जिग्स और बहुत आसानी से एक मतलब स्टैंडर्डाइज्ड लैम्प बन के आता है. तो ईच एंड एवरी गैप दैट यू आर सीइंग इन द लैम्प इज़ वेरी प्रिसाइजली डन, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मार्क्स हैं, मोल्ड्स में ऑलरेडी मार्क्स है. तो एक लैम्प दूसरे लैम्प से बहुत मतलब मिलता रहता है. Right, we use a lot of jigs as well. ठीक है, as you can see. Now Sugandha will talk about marketing. Hello everyone. So for the growth of a brand, marketing is one of the most crucial vertical. But first thing is that designing and manufacturing, all these are very important for it. So now let's discuss it how it plays a crucial role in marketing and how we can grow. So we made something in craft, and now when we go to the market, a general perspective about craft is that it is not something very presentable. Matlab, if we build a very good home and we bring a craft item, especially from bamboo, we have seen those baskets, उनमें से वो fibers निकला होता है. It's not that beautiful. तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है. तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वॉट वी डिड इज़ कि हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन, ऐसी फिनिशिंग थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया कि आर प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, नॉट जस्ट विजिबली बट लाइक यूज़ करने में भी. इफ़ एनीवन सीज इट तो एवरीथिंग इज़ सो प्रिसाइज. तो यहाँ पे वो चीज़, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि कस्टमर भी इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव को देख पाए, उसको पता चले कि हाँ ये आइटम ऐसा, ये क्राफ्ट जो मैं जानता था क्राफ्ट, ये वैसा नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ फोटोग्राफी. सो व्हाट फोटोग्राफी डज इट कि ये हेल्प करता है कस्टमर्स को देखने में कि हम लोग की यूएसपी क्या है और बैम्बू या क्राफ्ट प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है. तो व्हेन वी सी देम इन अ सेटिंग, मतलब एक अच्छे से घर में वी सी, या एक अच्छे से ऑफिस की सेटिंग में वी सी अ लैम्प एंड वी सी इट्स प्रिसाइजनेस, लाइक यू कैन सी कि कोई फाइबर निकला हुआ नहीं है. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. सो देयर आर मोर फोटोग्राफ्स लाइक दैट विच शो दैट हाउ ब्यूटिफुल दिस प्रोडक्ट इज़. तो ये चीज़ हम लोग फोटोग्राफी के थ्रू दिखाते हैं. इट्स लाइक कि अगर अच्छा दिखेगा नहीं तो अच्छा बिकेगा भी नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको अच्छे से दिखा पाएँ. फर्स्ट अगर आपको कोई प्रोडक्ट जैसे दिखा, लेट्स से एनी एड यू सी ऑन सोशल मीडिया, इफ़ इट लुक्स गुड यू जस्ट क्लिक ऑन इट, और नहीं तो वो स्क्रॉल हो गया. सो इट्स फोटोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द प्रोडक्ट प्लेसमेंट. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो कैसे परसीव करेगा कि ये वाकई में अच्छा है. तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट है वो राइट प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए. तो उसको लगना चाहिए, मतलब राइट इन्फ्लुएंसर्स या जो भी वो जगह, जिस भी जगह कोई भी कस्टमर देखता है या देखता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है मैं यहाँ से लूँ, या इंस्पिरेशन लेता है, तो उस राइट प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए. सो व्हाट वी डिड इज़ वी अप्लाइड टू सेवरल कॉम्पिटिशन्स and we were awarded so many awards, as you can see. We got published in several magazines. We got our products displayed in several exhibitions that were both national and international. So हम लोगों ने international भी focus किया because our products are sustainable. Sustainability is a very important aspect, especially in European area. So this exhibition, as you can see, it's in Germany, and what is very special about all this is that all these things we never spent a single penny. Like we got to Germany and our airfare, everything, our stay, this exhibition, transport, everything was free. So that is smart budgeting, because when we start something we have a limited budget. तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान भी करना चाहिए कि हम लोग कितना भी स्पेंड नहीं कर सकते. एक एक पैनी का हम लोग को किस तरीके से उसे बजट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं,
ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज द पैसिव मार्केटिंग व्हाट वी डिड. मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कि अवार्ड्स जीतेंगे और मैगजीन्स कवर करेंगे, हमें सोशल मीडिया कवर करेंगे. तो इस वजह से क्या होगा कि हमें मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा. अ लॉट ऑफ कंपनीज करंटली मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं. मतलब लाइक देयर रेवेन्यू का ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% अपने टोटल रेवेन्यू का मार्केटिंग में स्पेंड हो जाता है. तो इनिशियली स्टार्टअप में फंडिंग का बहुत ज़्यादा क्रंच होता है अपने पास. तो सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी दैट वी वर्कड अपॉन. और इस तरह से हम मतलब शुरू से ही हम मतलब सोशल मीडिया वगैरह में हमारा ट्रैक काफ़ी अच्छा बनता गया. What we did was that we started on social media platforms, and in the initial like 1-2 months we already had 5,000 above 5,000 followers, and that too organically. Like हम लोगों ने कोई ad नहीं चलाया, कुछ नहीं, and organically we grew for like 5,000. And still like most of our social media following is all organic. So उसके लिए बहुत important हो जाता है कि हम लोग का एंगेजमेंट कैसे है, हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्या वो ये समझना कि क्या वो यूज़र के साथ क्लिक करेगा. एवरी लिटिल फैक्टर मैटर्स कि हम लोग कब पोस्ट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है, किस डे, एवरीथिंग मैटर्स. तो वो सब समझना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट. Then another important point is logistic. So as a customer, if we think about as like a customer, we order something online. So what is the next step? We start tracking the delivery. हमारा order कब आ रहा है? It's so important. Like once we order it, we want it as fast as we can. So here to make that delivery fast, several factors again comes to play. Like for manufacturing, what we do is that हम लोग बल्क में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. रीज़न उसके लिए अगेन जो मोल्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. हमारे सारे जो पार्ट्स हैं दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क, और वो इंटरचेंजेबल है. मतलब एक लैग किसी और प्रोडक्ट में भी यूज़ हो सकती है. ये नहीं है कि इसके साथ यही लैग जाएगी, जो कि क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. सो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के टाइम में अराउंड 14 डेज़ का हमारा लीड टाइम था एक प्रोडक्ट अगर ऑर्डर आता था. पर अभी हम लोग लाइक वी डिस्पैच ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन 2 days. 2 दिन में हम डिस्पैच कर देते हैं प्रोडक्ट. सो बेसिकली व्हाट वी आर मेकिंग पॉसिबल इज़ कि क्राफ्ट प्रोडक्ट को हम लोग इंडस्ट्रियल वो दे रहे हैं, मतलब मास मैन्युफैक्चरिंग करके एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो क्राफ्ट इज़ चेंजिंग. मतलब क्राफ्ट सिर्फ वो नहीं है कि हम लोगों ने टाइम लेकर दे रहे हैं, तो हर तरीके से क्राफ्ट को इवॉल्व कर रहे हैं बेसिकली आज के ज़माने को देखते हुए. एंड ये सब बहुत प्ले करता है कि जब इसका रिव्यू आएगा तो ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की सेल में. देन देयर इज़ फ्लैट पैकेजिंग. सो जब हम लोग लॉजिस्टिक में Tosha this side, I had a question. This one, like आपने कहा कि this is raw material is cane and bamboo. So हम क्राफ्ट में जब भी करते हैं तो रॉ मटेरियल का ही इशू होता है कि उसमें क्योंकि बहुत आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस टाइप का होता है. मतलब कभी अलग हो सकता है, कभी फिनिशेस. तो उसको आप लोग मतलब कैसे इंश्योर करते हैं कि वो एक जैसा रहे? As I said, कि हम लोग को सबसे पहले ना वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द रॉ मटेरियल. ठीक है. तो अभी आपने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, हम लोगों ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लैम्प्स के एग्जांपल देखे होंगे, तो उसमें हमने स्टैंडर्डाइज किया है उसको लैम्प्स के स्ट्रिप्स को. तो स्ट्रिप जो आता है वो हमारा 10 mm बाई 0.5 थिकनेस का ही वो स्ट्रिप रहता है. और उसका क्वालिटी चेक बहुत मतलब इंटेंसिव वे में उसका क्वालिटी चेक होती है. मतलब हमारा क्वालिटी चेक बहुत सारे लेवल पे होता है. तो एक क्वालिटी चेक लेवल इवन रॉ मटेरियल जब हमारा हम जब थोड़ा स्टैंडर्डाइज करते हैं उस टाइम भी एक क्वालिटी चेक होती है. तो स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
तो एक तुमको मैंने बताया कि स्टैंडर्डाइज्ड जो कर रहे हैं वो अपना बैम्बू का स्ट्रिप. देन अगेन द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर स्टैंडर्डाइजिंग इज द बैम्बू स्लैट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग आवर फर्नीचर एज वेल. तो अभी हम लोग इन दो स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करके ही अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. लेटर ऑन also working on the round section of bamboo as well. Currently the research is happening on the background, जिसमें हम round sections को भी standardize कर पाएं. तो उस तरह से हम लोग try कर रहे हैं कि standardization is the way forward. We have more than 8 levels of quality check, and हर step पे quality check होता है to make sure कि जो standardization है वो perfect है. I guess and then the molds thing, like the manufacturing part में जो molds हैं वो further make sure करते हैं कि जो भी product manufacture हो रहा है वो उस molds की वजह से और standardize होता है कि उसके size में किसी भी चीज में कोई difference नहीं रह जाता, band में या किसी भी चीज में. Okay, ma'am, understood. Thank you. Yeah. So next is logistic cost. So cost is another always an important factor. कि अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो वो कस्टमर के लिए भी ठीक नहीं होगा एंड हमारे लिए ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा. तो इट सर्कल्स बैक टू डिजाइन कि हम लोगों ने जो भी डिजाइन किया वो इस वे में किया कि हम उसे फ्लैट पैक कर सकें. सो व्हाट इट डज इज कि हम लोगों का कहीं ना कहीं वी ऑल नो कि जो पूरा मार्केट है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है. सो इट्स लाइक, और हम लोग इंटरनेशनल मार्केट भी ग्रैब करना चाहते हैं. तो वी नीड टू मेक श्योर कि सारे प्रोडक्ट्स इजीली एंड एट लो कॉस्ट डिलीवर हो जाएं. बट व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर, लाइटिंग, जिनका इतना बड़ा बड़ा साइज है तो इट बिकम्स अ इशू कि इनका इतना ज्यादा शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा. So what we did is that all 3D designs can be flat packed in 2D. So this is seashell lamp, and as you can see, it can be flat packed in 2D. This is the chair. Again, it can be flat packed. It comes in a small box. It comes in a really very small box. मतलब 100 mm by 600 mm. मतलब इतने छोटे बॉक्स में आता है. And you can just assemble it in less than 15 minutes. Yeah, even I have done the assembly and it's so easy. So all thanks to him. This is the box. We can flat pack it in. Another chair, again flat pack. Stools, flat packaging. These lamps, all these can be flat packaged. One more thing, there is like when we like ship a product, सिर्फ उसका size ही नहीं, उसका like volume and mass both matters. So all these products, as they are made up of bamboo, they are very very lightweight. So mass भी बहुत कम हो जाता है, बहुत easily deliverable हो जाता है, but strength is there. So these are the two very important verticals where we worked. And obviously it was possible only because of design and manufacturing. This is our current team. We have right now, we have more than 30 plus direct employees and more than 50 indirect employees. So it's quite emotional aspect for us. As you have seen, we just started with the team of 6 and now we have such a huge family. So this is it. If you have any questions. So, and also if you want to know any updates on bamboo or bicycle or anything, follow us on Instagram. So we are open to questions. Yeah, that's wonderful. Shashank, again, such a difficult area. Everybody knows a lot of answers, but the biggest challenge is how do you put all of them together and implement it? That's also a very, very big challenge, and I think you've done that phenomenally well. Again, this is really nice. Students, any questions you can unmute and ask, please.
I think सब clear है, सब कुछ समझ में आ गया. Hi, yeah. So I actually wanted to ask that you initially talked about how it's important to respect the material, and then you also led towards that, your product cannot completely look different or apart. You've tried to make it look like it's a part of a scenario. Whereas, when we're generally designing a product, our hopes or generally the view that we have is it should be unique and it should stand out and it should be the focus. So how is it that the balance between obviously making the product unique but also blending it with respect to other materials and other spaces, how do we keep a balance within the two? I think there are two areas we should focus upon. One is structure and another is aesthetic. So I'll start with this chair. This is one of my favorite products. So what happens here is it's with the legs. So as you can see, it's like a triangular geometry. So generally when you see the legs of the chair, there are straight legs and there is a joint. So the basic design of chair, we have completely changed it and evolved it. Like we eliminated the joints and we came up with this design. And even the back, it is ergonomically designed. So it is comfortable, it is different. Yeah, one of the good things about this chair is it has a cushiony effect actually. मतलब ऐसा दिख नहीं रहा होगा, but we have intentionally designed a triangle that you can see that's there at the backrest. So that gives a springy effect onto it. तो ये सारी चीजें इसको डिफरेंट बना रहा है और साथ में मतलब तुम्हारे कंटेम्प्रेरी स्पेस के अंदर भी ब्लेंड हो रहा है. मतलब द करंट प्रोडक्ट्स दैट यू आर हैविंग, मतलब द क्वालिटी एंड द फिनिश एंड द टेक्सचर, द कलर, लेट्स से द कलर वगैरह के साथ, मतलब यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ बैलेंस. वो बैलेंस मैं नहीं बता सकता, वो बैलेंस तुमको अपने प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कि वेयर टू ड्रॉ अ लाइन जहाँ पे उस तरह का बैलेंस हो कि वो डिफरेंट भी ना लगे और साथ में सबके साथ फ्रेंडली भी बिहेव करे. Okay, thank you. Yeah. Ankur, you raise your hand. Go ahead. Yeah. Good evening. So I have like two questions. So since ever whenever the subject of bamboo came, even from school, we were taught that, bamboo is such a wonderful plant that, every part of this plant is useful. So I'm just curious to know that, of all the bamboo work that you do, what other parts do you use except for the bamboo, that hollow bamboo part of it? Except for that, what other parts is that you use? How do you use it? That's my first question. And the second one is that also we have heard that the growth of bamboo, it's not a very sort of a sustainable plant. It takes a lot of water and a lot of time to grow. So from that point of view, I'd just like to hear how do you tackle that problem of wherever you procure your bamboo from? Yeah, thanks. Okay, so let me first answer to the first question that you have asked. क्या था? Sorry, blank हो गया. कौन सा question था? Parts, like the different parts of the bamboo. Sorry, yeah, other parts. So we currently we are not using any other parts other than the trunk or the stem, what you may call. क्योंकि दूसरे parts, let's say about if I talk about leaves or roots का जैसा अगर part है या node का part है, ठीक है, तो उसके properties बहुत ज़्यादा different हो जाते हैं बैम्बू के स्टेम से. तो दैट अगेन आई ट्रीट इट एज अ डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, उसको मैं वो मटेरियल जैसा ट्रीट नहीं करूंगा. तो अगेन देयर हैज टू गो अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन टू दिस कि उसको किस तरह से हम एफिशिएंटली यूज कर पाए. तो वी आर नॉट करेंटली यूजिंग एनी अदर पार्ट अदर देन द स्टेम.
बिकॉज मतलब अगेन वो एक पूरा एक अलग सा एक पैरेलल रिसर्च एरिया हो जाता है हमारे लिए. तो maybe in future we'll look into it. And regarding the second part of the question, शायद कुछ फैक्ट्स तुम्हारे रॉन्ग है. बैम्बू को ग्रो करने में सिर्फ 3.5 साल लगते हैं, मतलब मेच्योर होने में 3.5 से 4 साल लगते हैं. मतलब इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट. इसका एक का गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि कुछ बैम्बूज एक दिन में 3 इंच भी ग्रो किया है. ठीक है. एंड इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. हमारा खुद का वहाँ पे नर्सरी है जहाँ पे सतना में. इफ यू मतलब यू आर वेरी वेलकम देयर टू हैव अ विजिट. और काफी सारे मतलब अराउंड 150 हेक्टेयर का हमने बैम्बू प्लांटेशन वहाँ पे कर रखा है. Also it helps the soil, like soil erosion से prevent करता है, plus soil को enrich करता है. कई Even जगह पे crop rotation के लिए भी बैम्बू को यूज करते हैं. तो right. बैम्बू is very nutritious for soil. Yes, और कई जगह पे बैम्बू को एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. Yes. Okay, thank you. Yeah. Deepthi, you can ask your question. Deepthi? Deepthi, we're not able to hear you. Would you like to just like put it on the chat? We'll go to Toshit. Toshit, you go ahead. Deepthi, you can mute yourself and put it on the chat. Toshit, you go ahead. Hello, sir. Ma'am, I had a question that, like, in bamboo as a raw material, since in India, Go ahead. yes, in India there are so many types of bamboos. Like in if northeastern is different than South Indian bamboo and all. So I wanted to know, is there any specific type of treatment that applies to all, or is it like to make it in a certain finish, every other raw material has to be treated separately? Currently, matlab, there are two, industrial way of treating bamboo. One is the boric borax salt that we are currently using, and the other way is to use CCB, chrome copper boron. This is another way of treating bamboo. Generally, chrome copper boron काफी ज़्यादा expensive हो जाता है. This is usually used for an, if you want to use bamboo for an exterior, climate. Let's say if you are doing architecture, तो उसमें हम लोग chrome copper boron का use करते हैं for treating bamboo. तो all these treatment are basically क्या कर रहे हैं कि हम लोग starch को ये कर रहे हैं, टॉक्सिक बना रहे हैं, ताकि ये नहीं करे, मतलब टर्माइट्स वगैरह या बाकी इंसेक्टिसाइड्स इस पे अटैक ना करें. सो दिस द ओनली these are the basic treatments जो हम लोग करते हैं. मतलब और ये मतलब ये सारे बैम्बू के लिए काम करता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज. एंड इट or it also depends upon the way you are treating. For example, currently we use vacuum chambers. तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सारे पोर्स में से एयर का सक्शन हो जाता है और उस पोर्स में ये केमिकल बहुत अच्छे तरह से चला जाता है. और बहुत बार ऐसे भी इस तरह से भी ट्रीट करते हैं कि बैम्बू को सीधा खड़ा करके ग्रेविटी के ये में डिफ्यूजन के थ्रू से उसमें केमिकल्स डाला जाता है. सो दैट इज another method. Bushery is another method जहाँ पे क्या होता है कि बैम्बू को, मतलब बैम्बू acts like a pipe, और दूसरे एंड से what we usually do is एक दूसरे एंड से कवर करके और उसको प्रेशराइज वे में उसको इंसर्ट करते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं केमिकल को. तो वो अपने स्टेम में
कैपिलरी एक्शन के जरिए यहाँ से वहाँ क्रॉस कर जाता है. तो these are different methods, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लोग यूज करते हैं. We currently use vacuum impregnation method. Okay, sir. Thank you. And sir, actually, I'm a little curious about this because we are also working on sustainable. Our project is based on sustainability. So bamboo as a material is a very, like in my college, I had studied on it. It's a very unique material. Like it has the finish of wood and it has the strength of a steel. So that's why so many popping up. I just wanted to ask one more question, sir. Like I was currently using bamboo products at home, but like unlike wooden products, it tends to get moisture attracted to it and it darkens up. So is there any solution that we can generally use if you're working on that, like creating suppose a toothbrush holder or something like that? Because rather than having plastic, we can use these solutions. So is there something that we can use in these accessories that are near water, but at the same time they don't get moisturized or get blackened over time? So yeah, so this was the same issue that we were facing initially जब हमने start किया था. एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था गोवा में. तो गोवा has a lot of humidity. मुंबई जैसा वेदर है या मुंबई से और भी शायद ज्यादा ह्यूमिड वेदर होगा. तो a lot of our products was getting infected by fungus and molds. तो I was really very मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इस चीज को लेके कि फंगस कैसे हम लोग ये करें. तो currently अभी हम लोग जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि प्रोडक्ट को या मटेरियल को हम लोग मॉइस्चर से दूर रखने की कोशिश करते हैं. और दूर इस तरह से रखते हैं कि वी ट्रीट इट विथ सीलेंट्स, और वो सीलेंट्स मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है. तो बेसिकली क्या होता है कि वो सीलेंट एब्जॉर्ब मटेरियल सीलेंट एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर को फिर अंदर नहीं आने देता है. तो दैट्स व्हाट वी आर करेंटली डूइंग. वी आर यूजिंग पॉलीयूरेथेन सीलेंट्स और उसके वजह से मॉइस्चर का आना काफी हद तक कम हो गया है. तो वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स एज ऑफ नाउ आफ्टर यूजिंग दिस. Thank you, sir. Yeah. What about the scenario in COVID? How was your company? Did it face any problems during that time? We started selling our products during COVID. Like we started in late 2020 or mid 2020. So we started working from home. The one thing that helped us was molds. We made several molds and we gave them to the artisans. So they took that home and they were able to work from home. And we still had that same standardized final product. So so that was the back end of it. और front end तो हम लोग क्योंकि हमने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था, तो we don't have a comparison. But yeah, we were growing and we are still growing. Actually, I have a question. Yes. Like bamboo products, which countries are like demanding more? And in India also, like what kind of people or user are there? And is culture a factor in like buying bamboo products? See, you have to strategize your. You can repeat the question for us because this voice is not very audible. What is the question? You can repeat for us, Shashank. He's asking कि मतलब internationally और nationally मतलब किस तरह के लोग यूज कर रहे हैं बैम्बू को, यही क्वेश्चन है. Cultural factor. Cultural. Like culture, like which type of cultures are like, वो भी एक एस्पेक्ट है. हाँ, मतलब किस तरह के कल्चर के लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, क्या ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ. मतलब मैं हमारा जो एक स्ट्रैटेजी है वो मैं अपने मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि let's say if you want to place our product in current scenario, तो बैम्बू को अगर मैं वैसे ही पुराने तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट प्लेस करूंगा ना, मतलब वही सस्ते दाम में या लाइक प्लेसमेंट एज अ चीप काइंड ऑफ प्रोडक्ट लेट्स से, तो मुझे नहीं लगता प्रोडक्ट का सेल होगा. व्हाट आई स्ट्रांगली फील इज टू
make it as an aspirational product currently, क्योंकि बैम्बू को ऑलरेडी उसका जो इमेज है बहुत लो हो चुका है, क्योंकि बैम्बू का नोशन जो है पुअर मैन्स टिम्बर वाला अभी भी लोगों के दिमाग में है। तो व्हाट आई फील इज कि इसको थोड़ा हायर सेगमेंट में अभी हम लोग को प्लेस करना चाहिए, और क्योंकि इस पे रिसर्च इतना हुआ नहीं है, तो what will happen is कि जब जैसे हम हायर सेगमेंट में रखेंगे, मे बी आवर रेवेन्यू कैन go a bit faster, और उस रेवेन्यू के जरिए we can do a lot of research and we can make a lot of improvement in manufacturing in terms of technology and all. So that's how we are currently placing by making it an aspirational product. तो currently जो हमारे product के ये हैं users हैं वो urban areas में हैं, और हायर मिडिल क्लास और हायर क्लास को केटर हम लोग कर रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, और धीरे धीरे हम मे बी इन कमिंग 1 to 2 और मे बी लेट्स से 5 years में विल बी आल्सो प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज वेल. The culture is very important factor, not just for bamboo but for sustainability. Like what happens is, if we go for lower class or middle class, I'm talking about only the economical factor of this. So people are not that worried about sustainability. Like if we buy a product, how many of us check that how sustainable this product is? So but when we go to a like more urban, more higher economical class, it has become a trend. Sustainability is a trend. Like we get incoming messages where people ask us that how was this product manufactured, how is it sustainable. They want to know the details. They read those blogs where people say that ask how this product is manufactured, ask how much the artisans are being paid. So people ask these questions. This is the scenario in India, but when we go outside India, especially to Europe, people are like crazy about sustainable products. They love this. People love all these items, and when they see something so finished, so something that is not like normal craft craft products, they are even more eager to buy it. Like when we went to Germany, in that like exhibition I showed you, everything we took all got sold, and we got so many other orders, and even now we have them as regular customers. So yeah. Also I have one more question. Like what I experienced with like natural materials is that for like India is kind of a sustainable culture, I feel, because we have been using like wood, timber, or bamboos, or even grasses and all, like hemp, in like for ages, right? Yeah. But in culture like British, it's not that prominent. Mm-hmm. So they kind of respect the material more, or like give like think that bamboo is something very like they are not used to it, right? So does that factor, like how can we like in like Indian mindset, how can we break that barrier that bamboo is also a thing? Through design, and through manufacturing too. So this is the thing, like what is happening is currently what we generally see around is those bamboo items, and there is no research. मतलब कोई लोग इतना कोई research ही नहीं कर रहा. When we think about bamboo, we just think कि हाँ ये तो bamboo ही नहीं, it's with all the craft materials. हम लोग को वही इधर से वो फाइबर्स निकला हुआ है, थोड़े दिन में खराब हो जाएगा, 400 रुपए का बास्केट आ जाएगा. We have that mindset. तो उसके लिए ये मतलब उसके लिए you all are product designers, so you all also have to think about it. And हम लोग को सबको research सबसे, I mean के many of us should do research on it, like he did,
एंड हम लोग इसको वाकई में, जैसे कि बैम्बू को गोल्ड बोला जाता था किसी जमाने में, एंड वी कैन अगेन मेक इट दैट, बिकॉज इसमें वो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इसमें वो हर चीज है जो ये इस तरीके से कर सकता है, तो वी कैन डू दिस. Shashank, if you want to add something. You answered it very well. So what is the cost of this chair first, and second, how do you think like competitors like IKEA, where they are providing chairs at such low cost, around 500-800 bucks, how do you think you can compete them? And They are not our competitors अभी के लिए, तो मैं ये बोलूँगा. First of all, the price of this chair is 15,990 rupees. और इसमें बहुत, जैसे इंडियन कस्टमर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अरे ये तो बहुत महंगा है, पर बहुत सारे ये भी लोग बोलते हैं कि अरे इतने सस्ते में ये चेयर कैसे बेच रहे हो आप. बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी है. और एंड व्हाइल वी आर सेलिंग इंटरनेशनली, तो उनको ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा चीप लगता है. ठीक है, तो मतलब इसका अभी करेंटली जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब आई डोंट थिंक कि अभी 15,990 जो भी प्राइस है वो शायद इसका मे बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्रेक इवन कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, क्योंकि इसके रिसर्च में हमने काफ़ी पैसे स्पेंड किए. तो मे बी हम लोग अभी उसको क्योंकि और इम्प्रूव कर रहे हैं और फास्टर वे हो रहा है, क्वालिटी और बेटर हो रहा है, और कम टाइम में हम कर पा रहे हैं, तो अब जाके हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहे हैं धीरे धीरे. तो ये टाइम टेकिंग थिंग है, तो इट विल हैपन इवेंचुअली. और क्या तुम्हारा सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सॉरी. जो like I think how do you I know like IKEA is a huge company, but still if tomorrow See, I own a chair, yeah, and if it's 500 bucks versus 15,000 bucks, I would definitely go for it. I will go. I will like to answer this. The difference is in quality and design. It's same like there are many local markets here. I'll take a very basic example: t-shirts or a dress. So we can buy a t-shirt from roadside for like 200 or 300, under 500 bucks. And we can buy a similar looking t-shirt from Zara or any other designer brand too. And the price, there are 3 ranges. Zara is Toby middle class, and then a designer would be even more than that. But there is a difference for those who know what is the differences. Like उनका जो target customer है, they know what the difference is. तो वही difference है कि जो अगर सिंपली हम लोग कोई ब्रांड का पहनते हैं तो वी नो कि ये कॉटन प्योर है, ये एलर्जिक नहीं होगा, या और भी बहुत सारी चीजें, उसका कंफर्ट, उसको कितनी जल्दी वो फैब्रिक गल जाएगा या कलर छोड़ देगा, ये बहुत सारे स्मॉल फैक्टर्स हैं जो कि इवन डिजाइन भी हम लोग को वही सेम डिजाइन्स नहीं मिलेंगे. वी इवन इंस्टाग्राम पे आजकल हम लोग बहुत रील्स एक्सप्लोर करते हैं, वी सी डिजाइन्स, जो वो लोग डिजाइन के क्लोथ्स पहन रहे हैं, वो डिजाइन हम लोग को नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलता. तो वो डिजाइन, वो क्वालिटी, वो ही बहुत बड़ा फैक्टर है उसके प्राइस के लिए. तो IKEA और इसमें भी वही डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिफरेंस का ये. एंड पीपल लाइक टारगेट कस्टमर नोज कि हाँ ये डिफरेंस लाए करता है. तो टारगेट कस्टमर पिक करना हम लोग की बिजनेस ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इनिशियल बेसिस पे. तो अगर वी नो कि हम लोग का टारगेट कस्टमर क्या है, तो हम अपने प्रोडक्ट को उसी अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं. So your target is higher middle class, I would say? Yeah, at least for now. हाँ. I think we are running out of time, so we will, like see. There's only one last question in the chat. Let me check what that question is, and I think Ankur is asking again. How was your entrepreneurship journey, and who were your main investors? And the product part of this venture you explored first, or the research part? In fact, actually, Shashank, ये question आ रहा है मेरे क्लास से, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट को देख ही नहीं रहे. हम लोग अभी हमारे क्लास में ये बता रहे हैं, वी आर रनिंग ए कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, और ये बता रहे हैं कि पहले कस्टमर का पेन पता लगाओ,
then only we'll think of the product. We don't even, when we go to survey the customer, survey the users, we're not even telling them the product we have in our hand. So, it's a very interesting thing, but, from your point of view, this question is also interesting that, which came first? Because I think you had some sense of those thought processes. Can you please share some light on that? Yeah. So first of all, it's a two-way thing, Chakku sir. Matlab, we have to look upon कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है. लेट्स से यहाँ पे बहुत बड़ा गैप था कि आर्टिसंस को जॉब नहीं मिल रहे थे और मतलब बहुत सारे स्किल्ड आर्टिसंस हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब few artisans I have seen, they have weaved जैकेट आउट ऑफ बैम्बू. मतलब इतना स्किल के लोग थे पर उनके पास काम नहीं है. तो ये चीज मैंने काफी मैंने रियलाइज किया. तो आई ट्राइड टू सॉल्व दैट एज वेल. एंड ऑल्सो मतलब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब व्हाई आरंट वी गोइंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव. और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव का जाने का मतलब ये नहीं कि हम अपना लाइफस्टाइल को नीचे गिरा दें. आई फील कि मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव में भी जा सकते हैं और लाइफस्टाइल भी अपना बेटर हो सकता है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हेडोनिस्टिक सस्टेनेबिलिटी. तो मतलब सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि मतलब हम लोग सस्टेनेबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं. हम अपना लाइफस्टाइल एज अ वी आर living as a lifestyle there. So that's how we are solving from a two way. But what was the belief, Shashank? How did you spend so much money? You did so much investment in manufacturing. How were you sure that you would get orders? And of course, from the Indian eye, the chair is costly. For me, it doesn't look costly, but from the general eye, it seems costly because we were not the target customers anyway. The target customers are people who can afford that type of quality, who can afford that type of look, who want that differentiation, right? That's the differentiation you're giving. So, but what was your hunch? Because, for example, even if you sell that chair at 20,000 at international markets, go to go. So how did you, and that is that is the, what you call, I call it the braveness of the entrepreneur to look at your cost and cost your product and see to that your product goes to the right market segment so that they can pay the cost. It's quite a gray area, no, Shashank? पूरा कैसे आपने मिला के लिया? Even initially मैं भी कुछ मतलब एकदम स्ट्रांग होके मैं खड़ा नहीं हो गया था कि अरे ये बिकेगा ही. मैं भी बहुत डरा हुआ था इनिशियली. मतलब आई हैड टू लीव बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब मैं काफी अच्छे पोजीशन में था, काफी अच्छा जॉब कर रहा था. तो पर फिर भी मेरे आंखें के सामने मतलब फ्यूचर अंधेरे ही ऐसा दिख रहा था कि क्या होगा मुझे पता नहीं है. पर स्टिल तो दैट्स व्हाट मतलब ड्यूरिंग when I was doing my job as an industrial designer, उसके background में ही मैंने काम करना शुरू किया. and I started investing my time and also my finances. जो भी मेरा वो industrial designing job से जो भी मैं कमा रहा था, I started investing on that. So I thought that let's risk it, let's give it a try. तो तुरंत ही हमने मतलब प्रोडक्ट बनाया और मतलब वैलिडेशन मुझे चाहिए था. वैलिडेशन वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि मैं जो ये रिस्क ले रहा हूँ कहाँ जा रहा है, क्या ये मतलब वर्क करेगा या नहीं करेगा. तो आई नीडेड अ वैलिडेशन और बहुत अर्जेंटली मुझे वैलिडेशन चाहिए था इसका. तो आई स्टार्टेड शुरू में ही आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन टू डिजाइन कॉम्पिटिशंस. तो जैसे ही मैंने डिजाइन कॉम्पिटिशंस और एग्जीबिशंस में डालना शुरू किया तो मुझे उसके रिस्पॉन्स आने लगे एंड पीपल वर लाइकिंग इट. एक्चुअली पीपल वर लविंग इट. और मतलब एग्जीबिशंस में काफी मुझे अच्छे फीडबैक मिले और काफी प्रोडक्ट मतलब लोगों ने प्रोडक्ट काफी पसंद किया. तो दैट वाज माय वैलिडेशन एंड दैट वाज माय मोटिवेशन जो मुझे आगे काम करने के लिए और मतलब it was like a chain reaction for me. और वो धीरे धीरे मतलब बढ़ता चला गया. That scaled up. We're very glad to see that, Shashank and Sugandha. Very nice. I think there is Padma Chit Saxena. That's the last question we'll take.
Mr. Saxena, go ahead. Good evening, sir. Thank you so much. So, sir, actually, I had two questions. So I'll just quickly ask them. So the first question is about the standardization which you were talking about. So do you feel that there is a slow decline of creativity which also comes when there is a standardization picture put into the working of the products? So that was one question. And okay, I'm stopping Yeah. you here. Right. तो I'm just asking कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया और तुमने क्या ऐसा फील किया कि क्रिएटिविटी कम हो गई है हमारे प्रोडक्ट में? Absolutely not. I was asking this question. that answered your Right, question. but I was also asking this question in terms of when we look at the modular furniture industry, right? Okay. So standardization is something which I feel sort of declines creativity per se, because everything is modular. You have to follow some sets, some rules and guidelines. So I just wanted to know your See, that's the difference with us. One thing that I think fuels Shashank as a designer is that challenge. Like, how can we make something that is standardized, that can be flat pack, like it's modular, and still it's a new design. So Unconventional design. yeah, if you check our website, we have recently launched a series called Metamorphosis. So what happens there is that we made just 8 modules, and those 8 modules, it's a lamp series. They can combine in infinity numbers of combinations, and they can make linear lights, pendant lamps, table lamps, floor lamps, just 8 modules, and we combine them and we get infinity number of lights. So we do is we make a standardized 8 modules, just 8 modules, and we make infinite number of lights. In fact, that is the beauty, Sugandha. Like by standardization, actually you can get in more creativity, and you're also giving the customer the choice of building his own customized solution, which is really phenomenal. Right, so I'll look into it. Thank you so much. So it's like we shouldn't limit ourselves. Like if we think about industrialization, don't just think like money has started coming. Okay, we stop it. We just keep doing this. No, that's where as a designer and even as a company, we are somewhere stopping our growth. We are just about money. But we should, every factor is about creativity. That's how we started. So that's how we should grow. And one last question was about no Saxena, only one question I gave you. We are really out of time. Thank you so much. Like both of you, Shashank and Sugandha, I think the way you made the things so simple, straight things one by one, but the integrity is in depth in all of that. And the belief in the way you went with the company also was really phenomenal. You didn't mention a lot of pain points, but we know it's not easy to do all this. There must have been a lot of pain points in your journey, but but we are really glad to see the success coming out. And of course, maybe we'll just need one last question for you from my side to know, because we're doing an entrepreneurship course. We want to know your current sales turnover. And what is your future? Like within 1 year, what are you planning? What are your growths? So previous year, we did a sales of 65 lakhs. And this year, we are projecting about 1 to 1.2 crores. Congratulations. Very good. We wish you all the best. And let me take this opportunity to order 4 chairs for IDC. At the price you quoted in the presentation. Please do send 4 flat packs to us. We are like really inquisitive to see the chairs, and wish you both all the best in your. Wish you 3. In fact, your third partner also, founder also. Wish you all the 3
the very best. And like, thank you so much for your time and for coming in to speak to our both our classes on entrepreneurship skills as well as our product design students, because it's a challenge. Actually, if you believe in your challenge, you can take things forward. And I've been seeing Shashank, of course, since his student days, on how how focused he was on the building up of the products and materials. And I think it's a great journey, and wish you all the best. If you have any questions, you can DM us on our Instagram page and follow us. Yeah. I think your Instagram page should grow with 44 of my. I think we're 39 now, so we were 44 earlier. I think you will get that number. Yeah. And thank you, Chaku sir, so much for having us here. Thank you, sir. So we will again catch up with you whenever we need some input on this front. Yes, absolutely. Okay, bye. We'll close for this session. And I also have my colleagues from IIT Hyderabad. Shrikar, are you still there? I just want to say hello to you. Shrikar is a professor in IIT Hyderabad, and his team. And he also was in Herman Miller. Yeah. So fascinating to see all the work that you are doing, and I'm sure your work has inspired some of or all of the students who have attended the session. So looking forward to connecting with you in the future, and again we'll discuss more things that can happen in collaboration. Yeah, thanks. Absolutely, Shrikar. Thank you so much. Yeah. Thanks to Chaku. And on the chat, a lot of our students are also saying thanks. Thank you, Shrikar. So all the best. We'll catch up again. Good night, and have a great time in Bombay as well as later on. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you all.